थैंक यू परविंदर। सो हम परविंदर का म्यूज़िक पहली बार नहीं सुन रहे। परविंदर बहुत अजीज़ दोस्त है और उनका म्यूज़िक सुन के हमेशा हमें बहुत शांति महसूस होती है। तो हमने सोचा क्यों ना इस प्रोग्राम को, जनरली हम प्रोग्राम दीप प्रज्वलन या ऐसी चीज़ों से शुरू करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इसको इससे ही शुरुआत की जाए। इसलिए मैंने कुछ पहले बोला भी नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि मोबाइल फ़ोन्स प्लीज़ अपने ऑफ कर दी, मतलब साइलेंट पे कर दीजिए, ताकि किसी भी गेस्ट को डिस्टर्बेंस ना हो और पार्टिसिपेंट्स को। तो आई होप कि आपको सबको शांत हो गए होंगे आप लोग सब इस म्यूज़िक से। परविंदर के बारे में एक छोटा सा इंट्रो मैं देना चाहूँगी और बहुत छोटा सा है ये। हाँ, परविंदर सिंह अ मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एंड इंस्ट्रूमेंट मेकर फ्रॉम इंडिया। परविंदर अपने ओन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं और उसके वर्कशॉप्स भी लेते हैं। उनका खुद का स्टूडियो भी है नागपुर में। ही परफॉर्म्स विद इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द हैंड पैन, जो आपने अभी सुना, इसको हैंड पैन बोलते हैं, रावस्त, मोरचंग एंड कोरा, creating music that moves between folk traditions, world music and contemporary sound। और बहुत कुछ है, तो मैं दो शब्द परविंदर को बोलूँगी कि वो बोले अपने बारे में। और उसके बाद अगर हमें परविंदर को और एक्सटेंसिवली सुनना है और उनके बारे में जानना है तो हम उनके लिए अलग से सेशन रखेंगे, तब आप ज़रूर आए। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, एंड थैंक यू वैशाली एंड अलग एंगल टू ऑर्गेनाइज सच एन अमेजिंग इवेंट। हर बार यहाँ पे आके ऐसा लगता है घर पे आके बजा रहा हूँ, सो घर जैसा ही फील है। या थैंक यू सो मच। सॉरी, एक चीज़ रह गई। परविंदर, वापस आना पड़ेगा। हाँ, मैं ये पहले ही बता देती हूँ, मुझसे ये आज बातें करते वक्त कुछ भी भूल चूक हुई तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो परविंदर को एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से। मिली मैम, प्लीज़ आप आए। ये हमने स्पेशली लिविंग फ्यूचर के लिए एक आर्टवर्क बनाया है। परविंदर को घर जैसा फील हो रहा है, ये वो हमारे घर का ही है, बस दूसरे घर में रहता है अभी। तो पहले तो हम आपको परविंदर को एक सम्मान, प्यार भरा एक इस प्रोग्राम की याद के लिए फोटो ले लीजिए सर। हाँ, थैंक यू विवेकानंद। अच्छा, थैंक यू परविंदर, थैंक यू वेरी मच। आप सबको एक दो चीज़ें बतानी है। जैसे कि दिन भर आप हैं, आपको वॉशरूम की ज़रूरत लगेगी, तो वॉशरूम इस तरफ भी है और आगे से जाएंगे ऑडिटोरियम के बगल में भी है। और पानी की ज़रूरत है तो पानी बाहर में कंटेनर है, आप बॉटल भर सकते हैं। और दिन भर प्रोग्राम बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रक्चर्ड रहेगा, वो फ्लो के साथ जाएगा और आप उसमें जिए हमारे साथ। थैंक यू। ओके, तो जैसे कि हाँ, चेयर। तो हम अपने नेक्स्ट गेस्ट को सुनने जा रहे हैं। उनके साथ कुछ बातें होंगी, कुछ डायलॉग्स होंगे, आपके साथ सवाल जवाब होंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम बातें है। ओके, तो मैं पहले लिविंग फ्यूचर कलेक्टिव और अलग एंगल के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ। लिविंग फ्यूचर कलेक्टिव हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि हम सबको कॉन्वर्जेशन करना बहुत पसंद है, सवाल करना बहुत पसंद है। और हम हर महीने इसकी मीटिंग ले रहे हैं, मतलब गैदरिंग ले रहे हैं, जो कि नागपुर के लोगों को ही हम जान रहे हैं, अलग अलग फील्ड के। तो यहाँ पे हर महीने गैदरिंग होती है, तो अब आप सब लोग ग्रुप में जुड़ गए हैं तो आप उस गैदरिंग में आ सकते हैं। और हर फेस्टिवल कितना ऑफन होगा ये तो अभी हम बता नहीं सकते, बट साल में एक तो होगा ही, क्योंकि ये बहुत कुछ फंड्स और बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये आज गैदरिंग इसीलिए पॉसिबल हो पाई है क्योंकि कलेक्टिवली लोगों ने इसको फंड किया है। तो दिस इज़ नॉट वन पर्सन इनिशिएटिव, इसलिए इसका नाम लिविंग फ्यूचर है।
और लिविंग फ्यूचर इसलिए क्योंकि हम चाह रहे थे कि प्रेजेंट के बारे में जो हो रहा है, घट रहा है कॉन्शियसली, उसके बारे में भी लोग अवेयर हो, और फ्यूचर में हम कैसे जाना चाहते हैं, क्या स्टेप्स लेना चाहते हैं, उसके बारे में भी बातचीत हो। इसलिए इसका नाम लिविंग फ्यूचर कलेक्टिव रखा, ताकि सबको ये अपना लगे और ओनरशिप लगे सबको अपनी। इसमें हमने कुछ कुछ चीज़ें ऐसी ऐड की है कि हमने अकोमोडेशन लोकल स्टे रखा है, ताकि गेस्ट और भी अच्छी से नागपुर के लोगों के साथ मिलजुल के रह सके और हर एक को होस्ट करने का मौका मिले। उससे हमारा अकोमोडेशन का खर्चा बच जाता है। दूसरा, हमने अभी तो अलग एंगल वेन्यू है, पर अगर हम अलग वेन्यू रखते हैं तो शायद फंड्स इंक्रीज हो जाएंगे। सो बट टुडे अलग एंगल इज़ अ वेन्यू, तो हमारा वो फंड का खर्चा बहुत कम हो गया। देन हमने इसको नॉन कमर्शियल रखा है, इसलिए कलेक्टिवली लोगों ने फ़ंड इकट्ठा किया है। हम कोई कमर्शियल स्पॉन्सर के पास कभी नहीं जाएंगे फंड्स लेने के लिए, तो इसको नॉन कमर्शियल रखा है। सो ऐसा सा ये एक इनिशिएटिव है। तो आप आने वाले टाइम में अच्छी अच्छी बातें और कॉन्वर्जेशन सुनने के लिए तैयार रहिए। अलग एंगल जिस स्पेस में आज आप हैं, ये कम्युनिटी आर्ट सेंटर है, स्टार्टेड बाय 3 आर्टिस्ट। उनका घर भी इधर ही है, स्टूडियो भी इधर ही है। और यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है इसका ब्रीफ देती हूँ मैं। जहाँ पे आप अभी बैठे हैं, ये एक आर्ट गैलरी है। आप अपने आसपास कुछ 24 आर्टिस्ट की पेंटिंग देख रहे हैं। उनका एक दिन वर्कशॉप हुआ था यहाँ पे, एक ही दिन में उन्होंने पेंट किया है और यहाँ पे फिर उसका एग्जिबिट हुआ है। उसके बाद ये हर 15 दिन में अलग अलग आर्टिस्ट का शो लगता है। कुछ नागपुर से होते हैं, कुछ नागपुर के बाहर से होते हैं। जहाँ पे आप बैठे हैं वो एक DIY लैब भी है, डू इट योर सेल्फ लैब, जहाँ पे लोग पेंट, क्ले मॉडलिंग, विविंग, निवेदिता विविंग की वर्कशॉप लेती है। तो ऐसे अलग अलग वर्कशॉप्स होते रहते हैं, उसके लिए आप आ सकते हैं। सो दिस इज़ अ DIY लैब एंड दिस इज़ एन आर्ट गैलरी एंड टुडे इट्स अ वेन्यू फॉर लिविंग फ्यूचर कलेक्टिव। बाद में हमारा स्टूडियो है पीछे, स्कल्पटिंग। बाबा स्कल्प्टर है, तो आप जो भी यहाँ पे स्कल्पचर देख रहे हैं वो बाबा ने बनाया है, जो कि ललित सर तनुज सर के डैड है, हीराचंद विकमशी जी। ही इज़ एन आर्टिस्ट, ही इज़ अ स्कल्प्टर। और अलग एंगल में डिज़ाइन एस्पिरेंट्स आते हैं जो 2 साल के लिए अलग एंगल के साथ रुकते हैं। मास्टर स्टूडेंट्स भी होते हैं बहुत बार, और फिर वो अपना पोर्टफोलियो बना के अलग अलग डिज़ाइन कॉलेजेस में जाते हैं। तो वो भी एक चीज़ चलती है जिसको तनुज सर गाइड करते हैं और मिली मैम गाइड करती है। और अक्यूट एंगल भी है, छोटे 5 साल की उम्र से बच्चों के लिए। तो बहुत बार अक्यूट एंगल के बच्चे ही अलग एंगल में चले जाते हैं। तो इस तरह से ये कम्युनिटी आर्ट सेंटर है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नागपुर के लिए ये बहुत ज़रूरी है ये स्पेस, क्योंकि ये नागपुर के आर्ट कल्चर को ज़िंदा रखती है। सो इट्स अ वेरी ह्यूज कल्चरल कंट्रीब्यूशन। तो जितना मौका मिले यहाँ पे आइए, इफ़ यू आर ऑफ एनी फील्ड, एंड कीप वॉचिंग द एग्जीबिशन। और हम इंस्टा पे अपडेट करते रहते हैं एग्जीबिशन का, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। थैंक यू, इतना ही। अब मैं इनवाइट and democratic approach to design. This is something that we've been working on since that time. Okay, building for communities, right? So I'll just go next. So she said that it could be, and I'm happy that this is the strength of the crowd. She said that it could be a communicative presentation, so I've designed it that way. Avani. Okay, so this idea or this practice, so the presentation is divided in all the questions that we as a practice even debate and discuss today, right? And so many of them are not architectural, but many are. So these are very basic needs, right? But there's nothing basic about them anymore. If you look at the statistics, this is just one of them, but there are so many of our basic needs are also our major pollutants. You can see buildings being one of the largest, agricultural land use one of the bigger ones, but then you can tie it with food production and then it becomes the largest. Fashion is also one of as architects to deal with a basic need of a human being, right? Shelter, right? Likewise, a farmer is blessed to deal with a basic need of food. But it is the irony of our civilization
that none of this is basic anymore, right? I don't know, everyone should look at a talk by John Jendai on what is civilization. It's a TED talk, very viral. And this was there when we were starting our practice, 2011, 2012. And he really puts up very hard questions. He was a rural person who, in Thailand, who was not very good at studies, right? And he went to Bangkok to try to earn. And his life experience from a village to a city, the kind of food that he was eating, the kind of life that he was living, the kind of spaces that he was living in was so drastic that he started questioning what is civilization. Why have we as a human society landed here, right? This is what drives us as a practice also. And a lot of times the answers to these questions also come from the practice, right? So I will just take you to a very short, concise form of the journey that we as Design Jatra have had. This was our first project, okay? This is my own house. This is where I farm also. My parents were gracious enough to, give this project to me. I was shit scared of doing this, but they were confident somehow, and we did it. So I would like to ask everyone, especially the architects, what all materials went into doing this? What all, let's not call materials, what all resources went into doing this? Soil, anything else? Right? This is what we realized while doing this project. I will just go to the next image. I will tell this, the arch on the right. Everyone understands mortar, right? So any difference in the mortar? Yeah, it's cement mortar. So that was the two house away. So whatever skills they had, we decided to work with it. Whatever technologies were there, we decided. And arch is one of the most ecologically sustainable ways of spanning rooms. Okay, I'm not going in the technicalities of how ecology made it in cement. Big mistake, never do it. That arch fell 5 times. Okay, this was the fourth attempt for many reasons. And every time it fell, my parents' doubt grew. Are we doing the right thing? The house got built. For 6 months, my dad wouldn't walk under arches of the house. इकडनं तिकडे जायला, if there was an arch in between, I could see him pacing through the arch की बाबा कधी पडेल सांगता येणार नाही. So slowly, the house started being built. There were so many arches. In the village, they started calling it, in Marathi, it's called kaman. तर गावामध्ये त्याचं नाव. The failure was that the entire community was there to support, right? You see Bua, his son, and behind are some students. We all were a community. A lot of these guys are now working as architects. We were as a community building it, right? It failed, it got corrected. Materials came for very cheap because we developed such good friendships. Materials came for very cheap. Parallelly, there was a house being built. Actually, just you see, if you observe carefully, there's a road. Across that, there was a house being built. My house got built, and that
community registers of which family gave how much rice. So that family should not provide for rice in the next 5 pandums, right? Which family cooked the rice, so that family should not cook the rice for the next 5 pandums, right? Which right? What is also important is after the sacrifice is done, after they cauterize the meat, after they make it into smaller pieces, they distribute, so muscle, like the flesh is distributed equally. These each leaf represents one family in the village. Okay, it is so organized and it is so peaceful. They know how many family members are there in each. Accordingly, they will give the meat, and they don't distribute the meat how our mutton guy gives it. First, they will distribute the flesh, then they will distribute the bones, then they will distribute the organs, then they will distribute the skin. Right? If there is a pregnant woman, that woman gets double share. If there is an old person, that old person gets half share. Everything is documented, which will make us architects feel shameful about the kind of and the person documenting is high most of the time, high on mahua, but still there is documentation. The priest, okay, perma bolte usko, the priest doesn't do anything just because he is the one who's cutting the meat, gets the meat. There are so many rules. It's a complex system of celebrating festivals, unlike what happens with our Ganpati and whatever, right? This is another. This is example from our village where our office is, and this is. Has anybody seen a structure like this before? Do we know which tribe it belongs to? Yes. Has anyone gone to Ooty and seen Toda houses? Yes. In Garden Mund? Okay, okay. So, I will again not talk about the architecture and how brilliant that house is. But Todas don't live like this anymore. I had been there for architectural documentation in 2011 or 2012. That's also a very long time ago. Though I am still in touch with 2 of their community leaders, Todas don't live like this anymore. They live in normal houses. Though there are some Todas who live like this. So Ooty, you know what is the name of Ooty right now, no? Udak Mand, right? Mand in Toda language is village. The heart of Ooty is tribal. हम वहाँ पे टूरिस्टी चीज़ों के लिए जाते, we see everything, but we don't see this, right? Why these 2 images are put together is to highlight another aspect of community, how communities organize. All of this I'm telling because this is a dying resource, right? Everything that happens in communities is now rare. People have started doubting each other. People are not connecting with each other. All of these things are very common even in the villages, and these things are dying out, right? Both these are temples actually. So Toda community and our Warli community, both, and many such tribal communities throughout the country, in fact even the Madhyas of Gadchiroli, will always build their temple in natural material. अभी ये image को देखो. Look at the people building it. Do you see anything? Even if the temple is in perfect condition, they break it, or they break certain parts of it, and they make every family, one young person, male or female, comes and remakes it. Why? Because they should understand their technology, right? They should, it's a way of transferring knowledge. And they also keep records. If a family is not able to send a person, right, then the Warli community makes that young child works on somebody else's house. There are rules. Community के ये सारे rules community ने ही बनाए हुए होते हैं, ये सालों से चल रहे हैं. Again, dying traditions. Toda's not dying. This dying because it's so close to Mumbai.
another thing from the village that we have our office in. This is Anna Vastra Nivara ka. Again, I'll tell you the story of this couple. कुंभारे आडनाव, ठीक है. So they rear goats. Okay, so हाउस ये अगर आप देखोगे these are, it's a frame structure, timber frame, just like this, how these frames are. They will, every time the goat herd reduces, the goats stay with them. In our village, animals stay with human beings. Okay, so the house is designed for animals as much as human beings. So every time the goat population reduces, they will remove some walls and put it in their backyard, right? And the backyard, it eventually, because it's made out of bamboo and mud and cow dung, it decays, and the decay eventually reaches a bamboo grove, which is a community owned grove. The entire community is doing this so that the bamboo survives, right? So there is no one person responsible for the bamboo to survive and that resource to remain within the community, but the entire community is doing it. And then this guy also, when the goat increases the house. This is not just a story of the community, it's also of the technology. It's so easy for them. Actually, even this is easy. Like you just take out one panel, shift it. Similar thing they're doing with bamboo. So we always come to Varli paintings when we Varli person to draw the house. In fact, even everyone remembers आपण घराचं चित्र काढायचो, like we used to draw a house. The house percentage wise in the sheet was so much. Everyone remember there was a river, there was a mountain, there was some fish in the river. Very similar to this, right? Right? House म्हणजे house, or are we going to extend our thought into the surrounding, the community, the landscape, and the family itself? Okay, now let us all be natural builders for some time. Everyone is now responsible to build their house in natural material. Okay, what all are the problems that you think we will face? In what sense? Material life will, yeah, life will, it will not hold weather. That's one. So I'm writing all this, right? Knowledge. Knowledge and skill. What else? Availability of the materials. Oh yeah, availability of the material. What else? Convincing people to join. Yes, maintenance. What else? Mindset can be the one because we are seeing the society with so much grown of materialism and so many needs. After building our house, we are getting, we used to, Abhi, now that quota is also over, honey, mawa oil, all of these things once in a while. The problem of skill not being there is on us actually, because we don't give patronage to the right skill. Right skill ko right paisa nahi dene ka hai. So, and you don't want to develop a relationship with that mason, with that person who's building it, right? Just look at these houses. Can anyone guess where these are from? They are all from Maharashtra. Just
examples from various villages that we have documented. So that's a clue. एक दो घर guess करो. One is very easy. Which part of Maharashtra? Which one? This one? Above? No. This one is actually Konkan. Right? This one is Konkan. What about some other? You need to know Maharashtra very well, so I can give you benefit of doubt. Okay, I will tell you. This is also a very interesting community right here in Melghat. Okay, this is Gadchiroli. This is Pune district, Jalgaon. That is also Velle, Pune district. That is Ahmednagar, and that is Aurangabad. So every place has its stamp. Every place has masons who at least remember कि ये होता था. इससे replace हो रहा है ये सब. Look at the condition of the villages that we are being in right now. I won't be able to pinpoint which one is what, but everything is in the same villages that I pointed out. ते औरंगाबादचंच आहे. But look at the house earlier and here. हे कोकणातलंच आहे. But look at the condition of this house. This is Pradhan Mantri Awas Yojana houses, right? This is where the skill is being lost, because हम recognize ही नहीं करते कि ये skill है. मिट्टी से दीवार को लिपना skill है. It needs to be recognized, need to be given enough payment so that that happens, and needs patience from the patronage end, patience from our end. कि वो गलती करेगी, वो एक्सेप्ट करने का भी तो चाहिए ना. एंड गलती इज मोस्टली नॉट बिकॉज ऑफ द स्किल्ड पर्सन, इट्स बिकॉज ऑफ द मटीरियल समटाइम्स. Recognizing that, we have been working with all these masons and many more, and having a deep relationship with them. Ananta Mistri is our mentor, almost. Tribal person, almost given up on woodwork. But his woodcraft is legendary. I can tell you stories about his craftsmanship, and it's amazing, right? Praveen. All his brothers, cousins, friends did ITI or did some degree and went out, and he was left with carpentry. Has a kudaचं घर, and has also a kudaचं घर. We documented that house for us to learn from in initial days of our practice, and we had asked Sunil ke why do you want, he was going to take the yojana and break that, why are you breaking it? And he said ke madla mulgi nahi milnar, I won't get someone to marry. He redid it in the same technology and still got married. Okay, so he's now married, 2 kids. Okay, so I think most of these problems are dependent on relationship building. He sees my partner's house being built, and of Bangladesh. Gamcha, textile, and Gamcha is also labor identity. And fish, jute. तो मैंने उसका नाम रखा जातीय गालीचा, national carpet. So now when I call national identity and carpet, it creates a adverse meaning, or it's a sarcastic. यूज़ करना अच्छा लगता है, ऑर्गेनिक टर्मरिक रेड, तो मैं सब जगह पे पहले अपने साथ में लेके घूमता था. सो उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल कर दिया था मैंने, और आजू बाजू में वो पाउडर ऐसे डाला था कि पीपल कैन नॉट सी. सो जैसे द स्कूल ओपन एंड पीपल स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द कारपेट, दे स्टार्टेड मेकिंग द कारपेट रेड. सो धीरे 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 करके वो पूरा लाल बनता गया. एंड व्हेन यू स्टेप ऑन,
when you enter the room you will know, oh, we are actually walking on something. तो जैसे वो देखा और वो उतर जाएंगे उसके ऊपर से. So that's some sort of ऐसा कि अरे हम किस पे चल रहे हैं, ये तो कारपेट तो नहीं है, कोई स्कल्पचर का पार्ट है या आर्ट वर्क है. सो लेकिन ये पूरा लाल बन गया था टूवर्ड्स दी एंड. बट हाँ, ये मेरा परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ, वो कपड़े के हमने धो के कुछ और फ्लैग जैसा बनाया था, कुछ बैग्स बनाए थे उसके, वो गांव वाले के एक दर्जी को दे दिया था. और ये फ़िश वापस मैंने चित्रा नदी को दे दिया क्योंकि थोड़े समय में वो वापस उसके अंदर जाके मर्ज हो जाएगा नेचर में. Then in 2014 I received on the similar presentation I received this FICA Foundation for Indian Contemporary Art का एक grant. So वहाँ पे just a minute. So यहाँ पे, as I said, I was working in Orissa since 2007. So I have been interacting with a lot of community. And 2009, as a part of my master's program, I had to go under an industrial training or artisan training. अब मैं था हैंडमेड इंडिया बाय अदिति रंजन फ्रॉम NID अहमदाबाद. तो वो इमेज जब मैंने देखा था तो काफ़ी ऐसा लगा था कि आई रियली वांट टू लर्न दिस आर्ट, जो मैंने नहीं सीखा था. सो दे वर मेकिंग बेल मेटल ब्रास से फिश, फ्लेक्सिबल फिश. तो जब मैं उसको ढूंढना चालू किया तो मुझे नहीं मिल रहा था काफ़ी सालों तक. So 2009 में I could not do my internship over there, but मैं ढूंढता रहा. So I got a chance in 2012 for another project. I was in Orissa. फिर उनको ढूंढ के निकाला मैंने घूमते फिरते. तो जिस व्यक्ति के साथ मैं रुका था, आर्टिसन प्रदीप जी महाराणा, तो उनके घर में ना टॉयलेट है ना कुछ फैसिलिटी हैं, और ही इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट स्टॉप मेकिंग दिस. में आप बाहर से आए हो, बहुत सारे लोग आते हैं, पूछते हैं, लेकिन चले जाते हैं, कुछ होता नहीं है. तो मैं उनके साथ में 3-4 दिन रुका गांव में, और वापस आके मैंने सोचा कि चलो ये एक प्रोजेक्ट लिखा जाए. देन आई अप्लाइड टू फीका एंड आई रिसीव्ड द ग्रांट ऑन द सेकंड गो, नॉट इन द फर्स्ट वन. बस फर्स्ट में कुछ प्रॉब्लम था. सो यहाँ पे मल्टीपल कोलैबोरेशन मैंने किया है. सो क्राफ्ट काफ़ी फ्लरिशिंग है, और यही समय ऐसा होता है कि जहाँ पे 100 करोड़ रुपीस का ग्रांट मिलता है एक विलेज को, कि आपका जिसमें कुछ 25 करोड़ रुपीस विल गो टू देयर पक्का टॉयलेट बनाने के लिए ग्रांट, और उनके लिए एक नया विलेज सेटअप होगा जहाँ पे वो लोग अपना काम डिस्प्ले कर सकते हैं. सो दे स्टार्टेड गेटिंग एग्जीबिशन स्पेस ना, ये वो पूरा काफ़ी सारा उनको फैसिलिटी मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसको सीधा वो प्रॉफिट में दिखा सकता है कि 5 साल में इतना प्रॉफिट हुआ. फेल होने का भी समय मैंने डर है. सो आई रोट दिस प्रोजेक्ट एंड दोनों कम्युनिटी को कोलैबोरेट करने के लिए यहाँ पे साउंड क्वालिटी छः आर्ट वर्क बनाए थे, सबका टाइमिंग है. तो 2 ब्लास्ट जो हो रहे हैं वो उसमें ये पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन था वो 3 मिनट का था, उसमें कुछ 50-60 जितने होते हैं, लेकिन मेरा कैमरा जहाँ पे वहाँ पे इतने ही हो रहे थे. तो
दैट मीन्स कि कितना सारा हो रहा है विद इन 3 मिनट्स, तो बाकी पूरे दिन में कितना होगा, पूरे साल में कितना होगा. सो हर एक नदी का शायद यही प्रॉब्लम है इंडिया की. तो माई आइडिया वॉज टू क्रिएट समथिंग इन बड़ौदा बट विच कैन बी रिलेटेड टू ऑल द प्लेसेस. सो अगेन आई एम ऑल्सो टेकिंग लॉट ऑफ पिक्चर ऑफ वाटर सरफेसेस, कि कभी भी मुझे दूसरे कलर का पानी मिलता है तो मैं उसका फोटोग्राफ लेता हूँ. It can look like reflection of water. So I'm using medium which are glossy to make it shiny. And the project was river black. So यहाँ पे मैंने लिखा है कि सरफेस को मैं ले रहा हूँ, लेकिन एक जगह पे जो था वो काला पानी था. सो रिवर फ्रंट था, उस वो जहाँ पे ख़त्म होता है उसके बाद में देर आर 4 just after that and 21 in total in the range of Ahmedabad, औडा. उसके अंदर 21 आउटलेट निकल रहे हैं जो गटर के हैं और वो पूरा पानी को काला कर रहे हैं आगे से. सो ये जो रिवर बैक मैंने टाइटल दिया, बट रिवर ब्लैक लिखा क्योंकि सो आई लाइक टू वर्क विद द टाइटल अ लॉट, जहाँ पे मैंने क्रिएट किया था दिस ब्लैक एक्सपीरियंस ऑफ वाटर. After that, Arvind Mills has Indigo. Again, I wanted to work with the same theme, so I visited their factory, and I saw कि 1000 मीटर का एक ताका निकलता है, वो वॉशिंग मशीन में जाता है तो उसका रेसिड्यू बचता है उसके, सो जो लिंट बचता है, एंड विच इज़ 100% ऑफ नो यूज़. So I use that material to create a pulp, and these are the evidence कि क्या क्या pulp में से निकलता है, and I created 3 different color lint to create the surface, and the title of the work is Before the Sunrise. So पानी का color अलग अलग circumstances में change होता है. एक तो throughout the day because of the reflection of the sun. मड के लिए अगर स्काई ब्लू है तो आपको ब्लू भी दिखेगा. सो एवरी डे द कलर, और एवरी टाइम द कलर इज चेंजिंग ऑफ द वाटर. द वाटर रिफ्लेक्ट्स वॉट, वाटर ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स अस, वी लिविंग ऑन द बैंक ऑफ द वाटर. बट यहाँ पे है अंधेरे में से अभी उजाला हो रहा है. सो इट्स ऑल्सो अ सार्कास्टिक कमेंट ऑन इट, लाइक बिफोर द सनराइज, let the sun or let the light be there to know what are the real color. These are the image of that. Then an imposed object, series of 20 archival print. Here I collaborated with a filmmaker, documentary filmmaker and film editor whose name is Sanjeev Shah, who works largely with Ketan Mehta, like not just Bhavni Bhavai but मिर्च मसाला और जितने भी केतन मेहता के पुराने फिल्म हैं उसमें कटिंग एंड एडिटिंग का जो काम कर रहा था, इट वाज संजीव शाह, who made this documentary, who made this film which is called as Hu Hushi Hushi Lal. It's on the Sabarmati river and the cutthroat politics of that time. So he had documented some part in Sabarmati in 1983 to 1987, and I asked him for his documentation. So I am using his photography, printing them on a paper, and how a riverfront ka cross section was imposed on the community who was living on the river. So these are like पुराना शुक्रवारी जो मार्केट लगता था, उसके ऊपर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ गया है, एक रिवर फ्रंट. सो पुराने फोटोग्राफ में मैं ऊपर ड्राइंग कर रहा हूँ. यू विल बी एबल टू सी ऑल द डिटेल ऑन माई वेब पेज. एंड दिस कंटिन्यू, दिस वर्क इज अनदर on the same Sabarmati river where I am using Sabarmati ka रेत and cement on a brick. The black and white, जहाँ पे साबरमती का यूज़ कपड़े धोने में, गधे से रेत एक्सट्रैक्ट करने में, हाउस होल्ड में यूज़ हो रहा था,
और दूसरा है आफ्टर द रिवर फ्रंट स्ट्रक्चर आने के बाद में 14 फरवरी को कुछ दल के लोग लव बर्ड्स जो प्यार फरमाने के लिए बैठे थे उनको डंडे मार रहे हैं। तो ये दो इमेज को मैंने लिया है एंड उसको दीज आर द टू इमेजेस Sabarmati in Ahmedabad. So this is the cutout of an art, a future project which is called as Headwork to J Point. This will be my last project. I have not started yet, but I am just showing the glimpse. I am also involved in Vishwamitri struggle as a signee, as a litigation, and I work with the concerned citizens of Baroda. And in Gir, I am working with 2 to 3 organizations. It's not non-registered organization, but how to sustain in Gir? What are the policy that we'll have to fight with? That to make the biodiversity living. So not only many time I am also Asiatora. How the forest department is struggling to remove one plant, and I am making a video on that. So that is going to be my next project in Gir Forest, and this headwork to J Point starts from um a milestone which I came across. I don't know why that image is not here, but there was a milestone nearby Baroda which is called J Point, which gave me एक कुछ ज़्यादा एक कुतूहल कि ये कोई जगह का नाम जे पॉइंट कैसे हो सकता है, लेकिन उस हेडवर्क में देखा पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। तब मुझे पता चला कि मैं जो किलोमीटर क्रॉस कर रहा हूँ वहाँ पे बाजू में एक गटर का चैनल है विच इज़ कॉल्ड VCL एफ्लुएंट चैनल, वडोदरा एनवायरो चैनल। सो जहाँ पे वो सीमेंट के लिड जो लगाए हुए उसके ऊपर। सो आई स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग दिस जर्नी एंड आई केम help of government. We were looking at the borewell, लोग जिस पे खेती कर रहे हैं उसका पानी लाल पीला काला। दिस इज आइस फैक्ट्री जो जिसको जलाराम आइस फैक्ट्री जिसको लोग पीले बर्फ़ की फैक्ट्री बोलते हैं। तो उस किसी को लोकल नाम नहीं पता है। सो ऑल द विलेजेस बिकेम डिफरेंट कलर वाटर टेबल। सो ग्राउंड वाटर के साथ में काफ़ी सारा प्रॉब्लम चल रहा है और उसके ऊपर जो जो एक्टिविटी हो रही है वो मैं डॉक्यूमेंट कर रहा था। और जहाँ पे वो फाइनली जाके दरिया में मिलता है तो एक ऐसे छुपे हुए पाइप आके निकलते हैं जो पूरा यू कैन सी दूर एकदम दूर वो दरिया है बंगाल सॉरी ये इसके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आई विल बी मेकिंग आर्ट वर्क। और एक था रोजी रेती जहाँ पे मैं सैंड माइनिंग के अंदर मैं काम कर रहा था। आई वॉज रिकॉर्डिंग द साउंड ऑफ द JCB और उसका वीडियो है रोजी रेती, बट आई डोंट नो इट्स हियर और नॉट। नो द रोजी रेती एक लंबा वीडियो है जहाँ पे क्रैब सैंड बबलर क्रैब जो होते हैं वो रेत निकालते हैं और उसके पीछे मैंने ये साउंड को ओवरलैप किया हुआ है। सो दैट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, यू विल बी एबल टू सी एंड फ्यू मोर थिंग। Maybe I'll working with community in a different way. रुगेन जी, आप जो काम कर रहे हैं मुझे लगता है वो बहुत Please make it Murugan only. जी नहीं। ओके रुगेन, आप जो काम कर रहे हैं वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है और भले ही इम्पॉर्टेंट नहीं लगता एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नेसेसरी वर्क फॉर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट वॉट एवर इज़ बीइंग डिटोरिएटिंग। और नागपुर में भी अंबाजरी तालाब में एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ ग्रो कर रही है और पूरा तालाब कवर कर दिया है। तो मे बी जो आप वहाँ कर रहे हैं हम आपसे गाइडेंस लेके यहाँ पे वो कुछ अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दैट।
And now we are open for questions. So, yes, Sanket. Is it okay if I ask two? Oh, oh, perfect. So I have half a page worth of questions, so I'll try to select some of them. What I love about your work is that it's so much lesser about the skill and so much more about what you actually want to say. Acha, okay. So it's so much more about the work you actually want to do and lesser about, lesser about what your craft and so much more about. So I love that. Uh, I was very curious to understand why you are so connected to the sea, but that's not the question. The question is, it almost feels like you are feeding off of reactions from the crowd. It's like your work is very provocative. So, like a filmmaker, after 2 years, when the first screening happens of the movie, do you almost like secretly watch people and try to feed off of that and then apply that to the next thing that you're going to create? Do you do that? Does that happen? I mean, even with the presentation, I'm always open for discussion, and all my works are outcome of discussion with various people, not just my friend from the artist community or my professor who has been mentoring me, or some senior friends or junior friends. But there are a lot of people जो मुझे कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं, सो मेरा काम सही में उसी से निकलता है. जैसे इसके पहले का प्रेजेंटेशन था, मुझे लगा कि यार मैं चला जाता हूँ उनके गांव में. तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बातों से एक नया सब्जेक्ट और निकलता है कि अभी ये गांव में जाके मैं और क्या कर सकता हूँ. तो मैं वापस एक प्रोजेक्ट वो 2013 में गिर में चालू होता है, वो कंटिन्यू रहता है. मैं वापस कुछ और आइडिया आता है, अगेन मैं जाता हूँ वहाँ पे. गिर में जाने का इसलिए भी रहता है कि कभी कुछ पॉलिसी चेंज हो रहा है एंड देयर इज़ अ स्ट्रगल. तो मुझे भी फ़ोन आता है, बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे नहीं पता मुझे क्यों बुला रहे हैं, बट आई आस्क क्वेश्चन टू ईदर विलेजर्स और फार्मर्स और द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. सो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आऊँ तो अच्छा है, तो आई मे हैव डिफरेंट ओपिनियन. तो इसलिए मुझे हर जगह पे, या विश्वामित्री के स्ट्रगल में, मुझे तो आर्किटेक्चर लैंडस्केप के बारे में, मुझे प्लांट के नाम भी नहीं पता है, बट दे आर इन्वॉल्विंग मी. तो जो साबरमती में जो काम था, दैट वॉज शोन टू रोहित भाई यूज देम फॉर हिज विश्वामित्री केस इन पुणे हाई कोर्ट. जब तो वो फोटोग्राफ उन्होंने प्रेजेंट किए थे कि ये किसी ने इसके ऊपर काम किया है, ये देखो. सो दैट वाज आल्सो समटाइम दे आर आल्सो यूज्ड एज अ टूल. सो कभी कभी ये भी मज़ा आता है मुझे देखने में कि आई फील गुड कि चलो इतना सिंप्लीफाई कर दिया है. सो आई एम नॉट यूजिंग लॉट ऑफ मेटाफोरिकल लैंग्वेज. वो काफ़ी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है कि आर्ट फॉर एलिट, वो ऐसा नहीं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. एक तो टाइटल और एक विजुअल, दोनों में हो सके उतना सिंपल बना देता हूँ कि आपको सीधा समझ में आ जाए, और एक लाइन पढ़ने से समझ में आना चाहिए. जबकि मेरे बहुत सारे आर्ट फील्ड के लोग उसको मना कर रहे हैं कि इतना इजी फीडिंग नहीं होना चाहिए, आप बहुत डायरेक्ट हो रहे हो. लेकिन शायद मुझे कभी ग्राफिक डिज़ाइनर बनने की भी कभी मन में था, तो शायद अधूरी इच्छाएं वो ऐसे निकल रही हैं, ऐसा भी हो सकता है. आपके पहले प्रोजेक्ट में वो दिखता है, हिट होता है. मतलब आई हिट मी के ओके द रेड. आई कैन ओनली वंडर हाउ इट मस्ट हैव. अनदर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू इज, आप ठीक है, हेलो, हाँ, अभी आपने पूरा प्रेजेंटेशन हिंदी में दिया, एकदम सिंपल लैंग्वेज का आपने प्रयोग किया. तो आप जब अपना काम उन लोगों के साथ भी दिख करते हो, क्योंकि आपके कुछ कोलैबोरेटर्स भी थे, तो उनको एक्सप्लेन करते टाइम कई बार हमारे साथ भी ऐसे होता है कि वो बहुत सिंपल सा वर्ड यूज़ करते हैं एंड एट टाइम्स ऑफेंडेड कि अरे नहीं नहीं, कम डेप्थ है मेरे काम का, माई वर्क हैज़ मोर डेप्थ देन दिस. डू यू स्ट्रगल विद दैट? कम होता है, बहुत कम स्ट्रगल रहता है, क्योंकि जिन लोगों जहाँ पे मैं जाके काम कर रहा हूँ, हाँ, जैसे केरला हैं, जो बांग्लादेश हैं,
थोड़ा एक लोकल व्यक्ति साथ में रहता है तो सपोर्ट रहता है कि कुछ है ऐसा। लेकिन मेरे ख्याल से जो विजुअल समझ में आते हैं या मैं कुछ ड्राइंग करके दिखाता हूँ उनको कैसा कुछ बना रहे हैं हम लोग, तो उनको आई थिंक स्टार्ट्स विद द स्किल और उसके बाद में इट एंड्स अप विद फन एंड बाकी तो सटायर जो लोग ले सकते हैं उनके लिए होता है। इज इट? या फैबुलस या अह, क्योंकि एक आर्टिस्ट जी की बात होने के बाद एक आर्टिस्ट की बात हो रही है, तो शायद सवाल और आने चाहिए मेरे ख्याल से। आपको फिर अगेन डर नहीं लगता है कि आपका आर्ट फॉर्म कहीं दिखाई नहीं देता, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है? तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्होंने बनाया है, अब डॉक्यूमेंट्री अगर आपने बनाई है या फोटोग्राफ्स के थ्रू आपने उसको रखा है संभाल के, तो वो या तो किसी बुक में जाएगी या फिर आपका कहीं प्रेजेंटेशन होगा तो आप दिखाएंगे। पर आप नहीं हैं और वो चीज़ लोगों को फिजिकली नहीं दिख पाएगी, इसका क्या आपको डर नहीं रहता है? मैं उसको आर्ट वर्क मैं उसको डर की तरह तो नहीं ले रहा हूँ। जब वो परफॉर्मेटिव वर्क रहते हैं वो जहाँ पे जिसने जितना देखा उसको वो उसके मेमोरी में ज़्यादा रहेगा अगर वो रह पाता है। इफ़ माई वर्क यू आर सीइंग फोटोग्राफ और समबडी इज सीइंग फिजिकली, वो काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पे। मुझे पता है हेल्प करने वाला डार्विन करके एक फिशरमैन था, मनोज करके एक रिक्शा वाला था, चंदू करके एक फ़ोटोग्राफ़र है जिसने मुझे हेल्प किया, एक भगत सिंह करके एक लड़का था जिसके माँ बाप ने नाम रखा है, वो केले को गर्म करके कैसे लंबे टाइम तक रख सकते हो, वो रात को सिखाने के लिए आया था मुझे कि सुबह को आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो इस तरीके से करोगे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने मुझे नॉलेज दिया। तो जब वो काम वहाँ पे देखने आए तो उनको अपना काम लग रहा था। जो पुलिस वाले टर्टल को रखने में हेल्प कर रहे थे, जो माछी मार लोग हैं जो उसको हेल्प कर रहे थे, तो उनको भी वो लगा कि अरे ये हम तो इस ऐसा ऐसा हो रहा था क्या है यहाँ पे। तो एक ऐसा है कि किसी के मेमोरी में चला जाएगा ये काम, कि वो जब भी कितने साल के बाद में भी आर्टिस्ट कम्युनिटी, जैसे किसी ने मेरा प्रेजेंटेशन देखा है जो स्टूडेंट हैं या कोई सीनियर है, वो लेके वो बीच का फोटोग्राफ, खाली बीच का फोटोग्राफ डालते हैं कि अरे तुम्हारा काम याद आ गया है, यहाँ पे जाते हैं। तो बिनाले में जो भी जाता है वो एक बार मुझे फोटोग्राफ भेज देता है कि यहीं पे तुम्हारा काम लगा था। तो अभी कुछ नहीं है वहाँ पे उसका रिमेनेंस, लेकिन जो जो देखा है उसको अगर वो काम याद आ रहा है, इट इज़ ऑल्सो मेरे लिए छोटा सा एक सक्सेस है। सही बात है। ये सवाल बस यूं ही था, पर आपका काम बहुत अच्छा है, आप इतने सेंसिटिव काम कर रहे हैं और ऐसी कोई एस्पेक्ट नहीं है जो लोगों को नहीं दिखती है, छोटी छोटी चीज़ें वो आप देख पा रहे हैं और उसको इतने सुंदर तरीके से कर पा रहे हैं। थैंक यू कि आप यहाँ पे आए और इतने अच्छी अपने सोचने के तरीके से लेके एक आर्ट वर्क बनाना, उसका एग्जीक्यूशन करना, लोगों को इन्वॉल्व करना, आप लोगों में इन्वॉल्व होते हैं जिससे आप बन रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है और फिर आर्ट वर्क बन रहा है। ग्रेट। हाय सर, एक्चुअली मुझे सिर्फ कह कि इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी टुडे क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है ना, जो भी आर्ट फॉर्म दिमाग में आता है वो बहुत काफ़ी मटेरियल इंटेंस होता है कि उसमें मटेरियल पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है आर्ट को दिखाने के लिए। बट द वे यू हैव शोन योर वर्क इज़ लाइक द मोस्ट सिंपलेस्ट वर्क आई हैव सीन, बट येट द आर्ट हैज़ रीच देयर जहाँ पे उसको पहुँचना चाहिए। एंड शार्दुल वाज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग इन आर्किटेक्चर। तो कहीं ना कहीं पे थॉट्स को कन्वे करने का मीडियम भी सिंपल हो सकता है। ये लर्निंग मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, थैंक यू फॉर दैट। मैं हमेशा एक शब्द यूज़ करता हूँ, मीनिंगफुल मटेरियल। तो अगर मुझे कुछ आर्ट कन्वे करना है या दिमाग में कुछ ख्यालात आ रहे हैं, तो अगर मैं स्कल्प्टर हूँ और कॉलेज में एकेडमिक में मैंने
वुड, स्टोन, मिट्टी माने फाइबर या प्लास्टर ऑफ पेरिस, हमने वो सब मटेरियल पे जो टिपिकल मटेरियल जो होता है एकेडमिक के उसके ऊपर काम किया होता है। लेकिन क्या हम सब कुछ वो चीज़ में बता सकते हैं? या कोई पेंटिंग बना रहा है, वो पेंटिंग में सब कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी होता है? अगर नदी के सामने खड़े रह के एक फ़ोटोग्राफ भी ले लिया जो जो पूरा कन्वे कर रहा है, या एक एक कविता निकल गई या कोई शब्द निकल गया, उतना काफ़ी नहीं है क्या हमारे लिए? तो मेरे ख्याल से वो सब्जेक्ट का डिमांड होता है कि मटेरियल क्या होता है। तो एक टाइटल, सब्जेक्ट और मटेरियल, ये तीनों का अमालगमेशन मैं कोशिश करता हूँ कि ये कहीं पे आके रुक जाए, तो वहाँ पे एक आर्टवर्क क्रिएट होता है। तो ये मेरे हमेशा मेरे डिमांड से नहीं आता, मैं थोड़ा सा कॉन्शियस रहता हूँ कि कौन सा मटेरियल होना चाहिए। ये बहुत सारा सवाल आता है कि जो लास्ट इंस्टॉलेशन किया जिसको बनाने में खर्चा काफ़ी हुआ है, इतने सारे लाइन बनाने, अभी 543 बने हुए हैं लेकिन मुझे 900 बनाने हैं। अभी वो प्रोडक्शन चालू ही है, उसके बीच में मैं डेडलाइन से पहले काम नहीं ख़त्म हुआ बिकॉज ऑफ गुजरात में बारिश बहुत हो रही थी। तो मैंने टाइटल चेंज कर दिया, मारी वाड़ी माँ। उसका दाम तो कुछ और था जो मैंने प्रपोजल डाला था ग्रांट के लिए, बट दे ऑल्सो अंडरस्टूड के चलो ठीक है। तो मैंने अपने दिमाग से नाम सिर्फ 500 जो जंगल से बाहर रह रहे हैं, नेशनल पार्क टेरिटरी से और ह्यूमन सिविलाइजेशन के और मैंगो ऑर्चिड्स के अंदर रह रहे, उनकी ही बात करूँगा अभी। सो वो हमेशा चेंज होता रहता है और हम उस तरीके से काम कर लेते हैं कि आधा इंस्टॉलेशन है, बाद में कुछ और बने। Hello, sir. Absolutely loved the way you have interpreted different issues in different regions. And as Sushant has said, there is no generally, matlab with architects, general perception, not about talking about specific artists or architects. We put into this fact that this is my work or my piece of design that I have designed or my artwork that I've created. That possession is nowhere seen in your work, and the process of unlearning and de-linking with the work you have already done and usko आप छोड़ देते हो. इन अ वे जो आपने शुरुआत में कुछ काम किया होगा, इट हैज़ मेड मतलब आपके आर्ट के थ्रू हैज़ इट टर्न इनटू एन एक्शन इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द प्लेस अ बेटर वे, मतलब एज इन गिर और मे बी जो शुरुआत के आपके प्रोजेक्ट्स थे, डिड इट अवेकन समबडी टू डू समथिंग ऑन इट? सो आई एम want to know the story if there is some. हाँ, कुछ कुछ ऐसा हुआ है क्योंकि इट वाज वाइडली कवर्ड इन द न्यूज़पेपर। तो वो अगर किसी के घर के अंदर मैं घुस के कुछ कमेंट की तो थोड़ा तो साफ रखेगा ही, तो थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता है कुछ समय। कितने लंबे समय तक वो फ़र्क रहता है वो मुझे पता है कि ज़्यादातर नहीं रहता। और बट हाँ, कुछ कुछ तो फ़र्क पड़ता है। जैसे जो उड़ीसा की कम्युनिटी थी उनमें तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है, इकोनॉमिकली एंड रिस्पेक्ट ऑल्सो, दोनों चीज़ उनको मिला है। तो वो एक आस्पेक्ट है। बट हाँ, वो सबकी आदतें जड़ से निकालना वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ही है। और दूसरा क्या है कि इजी एंड क्विक सॉल्यूशन के ऊपर जब तक हम लोग नहीं जा रहे हैं तब तक ये रीअकरेंस होगा कि मैं अपना घर साफ़ करने के लिए जो फेंक दिया कहीं पे भी, वो हमारी आदत बन गई कि मेरा इतना एरिया साफ़, वो मेरा एरिया है, सब कुछ मेरा है, वो हम नहीं देख रहे हैं ना, क्योंकि वो बाजू वाले का है, हमें क्या करना। तो जब तक ये मेंटालिटी नहीं जाएगी तो आप एक्टिविस्ट बन जाओ, आर्टिस्ट बन जाओ या फार्मर बन जाओ, वो कोई हम सिर्फ बातें कर सकते हैं। रियल जो हो रहा है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल तो हमारा नहीं है। हाँ हाँ, वो तो करना ही है। वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड
एंड माय गुरु तुषार जोग, उसने यूनिसेल मैन कर के ऊपर बहुत काम किया है कि एक ही मैं ही यूनिसेल हूँ, मैं तो करूँ अपना काम. हाय. तो मेरे दो सवाल है. एक इनिशियल जो आपने प्रोजेक्ट सिखाया टर्टल एंड फिश, द कलर रेड एक्चुअली ब्लीड्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट? So I wanted to know a little bit more about people's feelings or their reactions to that, because seeing something bleeding for a very long time has a different effect. We don't see that in our everyday life. And second is, did you ever like go back after, for example, mistaken case of turtles ho gaya, or you went back 3 years later, and did you again tap into memories of people to know ki how is that living inside their heads or minds? This is what I wanted to know. Sad part, I could not travel over there to do similar thing because it was, then I never get the chance, and the finance also will not support now all the time that I can get a chance to go there again and do the same thing, because that time we got a permission, and later on there were also certain rules that you can't do anything over there. So intervention happens only once, maybe. Otherwise, if it is, we were called, like if I was called by the team of Binale, which was their plan, but they had some funding issue and which never happened. So otherwise, I would have done it again. What was the second point? Color red, yes. नहीं, पीपल रिसीव इट लाइक बहुत, लेकिन थोड़ा सा मजाक ये भी बन रहा था कि लोग अरे ये क्या हो गया, सीधा सेल्फी. सो यहाँ पे कोई लोगों की मेंटालिटी ये हो गई ना कि सामने कोई मर रहा है तो उसके सामने फोटोग्राफी लेना है हेल्प से ज़्यादा. सो दैट इज़ समटाइम द वर्क इज़ ऑल्सो शोइंग फेलियर ऑफ आवर ओन. लेकिन अगर ज़्यादा सवाल नहीं है तो आई वुड लाइक टू एंड अप विथ समथिंग. Thank you so much, sir, for showing us such an incredible journey of yours. It's truly inspiring. My question is, what is a bigger satisfaction to you, that your work is contributing to sensitize the problems and later it is impacting a crowd on a much larger scale, or as an artist, as a journey, you are standing out and just making it to do for yourself? तो वो बहुत सारे इंस्पिरेशन हैं, उनको देख के वो लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए, यहाँ कभी मौका मिला हम कोलैबोरेट करें कोई चीज़ में. सो अगर आपको ऐसे कुछ लग रहा है कि मुझे देख के, मेरे काम को देख, more than happy to have certain kind of collaboration and let's do something together. इससे आगे तो मुझे नहीं पता है. Hi, Murugan. My question. Understanding you come like from any artwork comes from a personal space also, but the journey that happens, that maybe you're now comfortable with the materials that you work with, the environmental concerns, but also the product has an audience and your audience is not fixed, if I can see from the kinds of works that has produced. So how does that process, that journey get informed? Is it more of you? I'm just putting in words that I can understand. Is it more of you that gets seen in the artwork, or is it also informed at large by the audience that it will have? And I mean, I'm also trying to understand, like, where does one really stop or tell oneself, this is it in the journey? I'm not adding the layer of time there because I understand a lot of other factors come in. But as a product that gets artwork that gets generated, sorry if I'm using the word product, but the output that gets generated, where does it start really and where does it end?
तो उनके स्टूडेंट आके मेरा काम तोड़ने आ गए थे कि ये हमारा बीच है, यहाँ पे आप काम नहीं कर सकते हैं, हम तो आपसे बहुत अच्छा काम करते हैं। सो जेलसी पार्ट भी आ गया था, लेकिन वहाँ पे सुबह को इतने सारे लोग थे कि वो हरकत नहीं कर पाए थे। सो वी वर सेव बाय द क्राउड अदरवाइज। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग, मैंने मुझे नहीं पता है, बट क्राउड इज़ वेरी उसको थ्रेट कर सकता है, तो भी मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं पे सक्सेसफुल ही है। मैंने काफ़ी टाइम तक छोड़ दिया था क्योंकि आई हैड टू सर्वाइव। कॉलेज टाइम ऐसा था जहाँ पे मैं 3,000 रुपये भाड़ा भर के रह रहा था। तब बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट यहाँ वहाँ कभी भी चले जा, 5-7 हज़ार रुपये में बड़ौदा में चल जाता था हमारा एक महीना, और कुछ भी कर लेते थे। अभी पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, उनका ध्यान रखना है, अर्निंग, तो मेरे पूरे आर्ट का थोड़ा फॉर्म चेंज भी हुआ है। मैं गैलरी बेस भी आर्ट वर्क करता हूँ और सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट भी हूँ मैं। लेकिन ये जो लेटेस्ट काम किया, दैट वाज नॉट फॉर सेल, द लायन दैट आई मेड। तो मन में तो है कि ऐसा कुछ करो, लेकिन ड्यू टू द सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस वी डू प्रोड्यूस आर्ट वर्क ऑन कैनवास। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद कैनवास, बट समथिंग विच इज़ सेलेबल। हाँ, बात तो वही रहती है उसमें, लेकिन वो करना पड़ता है जस्ट टू सर्वाइव। थैंक यू मृगेन, एक ताली हो जाए। थैंक यू, बहुत ही एनलाइटनिंग टॉक था अगेन। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे जो भी ऑडियंस है, आर्किटेक्ट हो या कोई भी हो, उनको आपसे कनेक्ट होने में कोई भी दिक्कत। आपको एक छोटा सा हमारी याद देने के लिए, ताकि आप हमें ना भूलें और हम आपके साथ कोलैबोरेट करते रहें। थैंक यू। आप बोल रहे थे ना आप सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं बेचैनी है, पर ऐसा लगता है आपके चेहरे को देख के, आपके बात करने के रिदम को देख के, कि आपसे ज़्यादा सब लोग देख पा रहे हैं, पर वो कर नहीं पा रहे हैं, आप कर ले रहे हो। तो ये बहुत बड़ा सक्सेस है कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम मतलब रोज हर दिन देखते हैं, पर हम उस पर सोच नहीं पाते। तो जो सोच पाते हैं और वो कुछ कर पाते हैं, तो उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन तो कुछ होता ही नहीं है। थैंक यू, मतलब बिल्कुल आपका, शार्दुल का हर शब्द एकदम कान में गूंज रहा है। थैंक यू वेरी मच। जब हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में सोच रहे थे कि हम बातें करेंगे, इस तरीके से अलग अलग लोगों को बुलाएंगे, हम अपने सिटी में हम सब एक दूसरे को जानते हैं, पर कोई और आता है किसी और जॉनरा के साथ हमारे साथ, तो एक थोड़े दिन हमारा भी हीमोग्लोबिन और बढ़ जाता है और अच्छा लगता है। हम कुछ नई ताजगी के साथ फिर से काम शुरू करते हैं। तो जब हम लोग शुरू कर रहे थे तो किसको बुलाना है, कैसे बातें करनी है, कौन से लोग आएंगे, इन सब पे चर्चा हो रही थी। तो प्लेस सब कुछ हो जाता है, पर पेट, दोपहर के खाने का भी एक सवाल था। तो हमारे दोस्त हैं अक्षता कोठारी, तो उनके हस्बैंड यहाँ पे आपको नागपुर में पता होगा, सिंह साहब का ढाबा। तो सिंह साहब के ढाबा की तरफ से हम सब के लिए खाना है, आप ज़रूर खाइएगा। इसके बाद ब्रेक है, और जितने लोग भी आए हैं प्लीज़ शाम तक बने रहिए। आपके लिए बहुत ही अच्छा यादगार सुवीनियर है, आप उसको जब लेंगे तो आपको लगेगा कि हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं, वो याद आपको वो बार बार उस गिफ्ट को देख के आएगी। तो हर कोई बहुत प्रीशियस है हमारे लिए, जितने भी स्पेशल टॉक के लिए आए हैं,
इतने हम्बल और लाइफ के इतने इजी चीज़ों को लेके काम कर रहे हैं, शब्दों में भी बड़ा भारी उतार चढ़ाव नहीं है, इतनी सहजता से सब कुछ कर रहे हैं। तो और आप सब भी थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग लंच के लिए बढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ और आप ओके। तो हम जब कलेक्टिव की डिस्कशन कर रहे थे, जैसे कि मिली मैम ने बताया, को प्रेशर का पैसों का बोझ ना लगे, मेन था कि लोगों को कॉन्वर्जेशन सुनाना, बातें करना। तो इसी बीच जब एक मीटिंग में अचानक से उन्होंने बोला, गुरप्रीत सिंह, आई डोंट नो, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, कि मैं स्पॉन्सर करूँगा। और फिर हमने बोला कि नहीं नहीं, फ्री मत रखिए, लेट पीपल पे फॉर एटलीस्ट दिस। पर आज उनको इतना मना करने के बावजूद भी आज ऐसा हो रहा है कि उन्होंने आज दरवाजे पे आके बोला कि इट्स फ्री, वी आर नॉट टेकिंग मनी, सो फूड इज़ फ्री फॉर ऑल ऑफ यू, दो वी हैव मेंशन्ड इन द फॉर्म दैट यू हैव टू परचेज, बट नाउ इट्स फ्री। सो दैट इज़ वन सरप्राइज फॉर अस। और बहुत सरप्राइजेस अनफोल्ड हो रहे हैं हमारे लिए, जो कि इतना कमर्शियल वर्ल्ड होने के बावजूद भी हमने टिकट स्पॉन्सर की है रेलवे की, पर लोग आए हैं फ़्लाइट से और हमसे पैसे नहीं ले रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत अलग ही अनुभव हो रहा है सबके साथ का, कि इतने अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और वी आर वेरी हैप्पी एंड सरप्राइज ऑल्सो एट द सेम टाइम। थैंक यू। में यहाँ मिलेंगे, तो आप अभी टाइम देख लीजिए। अच्छा मुझे ना इसको मैं थोड़ा ऊपर कर सकता हूँ।
एकदम परफेक्ट। ओके, तो ये तो लास्ट वाला ही है इधर ना, तो इसको मैं रख देता हूँ नीचे। और ये क्लिकर चाहिए क्या? क्लिकर चाहिए? क्लिक क्लिक क्लिक। ललित सर, अब तो इसका काम ही नहीं है, इसके बाद पैनल ही है। हाँ हाँ, खाना खा। चलो खाना खा।
बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी. So this is a souvenir. These are seed balls from so that हमारी मेमोरी आपके साथ ग्रो करते रहे. अब मैं थोड़ा सा ग्रामार्ट के बारे में बताऊंगी. सो ग्रामार्ट इज़ ऑल्सो अ कलेक्टिव ऑफ अराउंड 300 फीमेल्स इन पारटसिंगा विलेज. और वो बहुत वेरीड डायमेंशन में काम करते हैं. सबसे पहले तो दे ग्रो देयर ओन कॉटन, दे आर ऑर्गेनिक फार्मर्स, दे ग्रो देयर ओन फूड. वो कॉटन से वो धागा भी बनाते हैं, कपड़े भी बनाते हैं इन बुटीक रेंज ऑल्सो. उसके बाद उसी धागे से वो राखियाँ बनाते हैं जिसको वो सीड बैंड्स बोलते हैं. उसके बाद वो फायर क्रैकर्स बनाते हैं जिसको वो सीड क्रैकर्स बोलते हैं, बट दे लुक एग्जैक्टली लाइक आवर फायर क्रैकर्स, ताकि दिवाली में हम पटाखे ना फोड़े बट सीड बॉम्ब्स फोड़े और उसको रिप्लेस करें. तो उन्होंने वो निकाला. उसके बाद दिवाली की मिठाइयों को भी उन्हें हूबहू बनाया और मिठाइयों की जगह सीड मिठाई देते हैं. सो देन दे मेक कैलेंडर्स, देन दे मेक सीड पेपर्स. सो वहाँ पे पूरा पेपर का यूनिट है और जितना बताऊँ उतना कम है. सो यू शुड डेफिनेटली विजिट पारटसिंगा विलेज टू नो मोर अबाउट ग्रामार्ट प्रोजेक्ट. एंड वो कुछ आर्टिस्ट लोगों का मिलके नाउ पूरे विलेज को उन्होंने बदला है और अराउंड विलेजेस के लोगों को साथ में लाके वो काम करते हैं. सो अराउंड 300 फीमेल्स आर देयर विद देम टू वर्क ऑन ऑल ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स. And now they are making bindi. So there are so many things they are doing. So that's what I'm saying. It's very less of me to speak about them. So please visit. And जब आप ये लेके जाएंगे घर में तो आप इंस्टा पे भी उनके बारे में देख सकते हैं और जान सकते हैं. And you can visit them anytime by calling them. So thank you. So ये लिए बिगर मत जाना. हमारा पैनल डिस्कशन जैसे ही ख़त्म होगा तो बाहर आपको हमारे कोई वॉल्टियर ये गिफ्ट करेंगे. सो आप प्लीज़ ये कैरी करें क्योंकि शायद शाम के इवेंट में और नए लोग आएंगे. तो दीज आर फॉर यू गाइज. सो जस्ट कैरी देम राइट नाउ. थैंक यू. आई थिंक एवरीबडी इज़ हियर एंड प्लीज़ सेटल डाउन. अपने मोबाइल फ़ोन्स अगर साइलेंट पे नहीं होंगे तो प्लीज़ कर दीजिए. क्यों? तो किसी को लगा कि पहले के 2 टॉक इतने अच्छे हुए इसलिए प्रेशर है क्या? तो फिर बात ये बनी कि नहीं, खाना इतना अच्छा था कि लोग सो न जाए उसका प्रेशर है, तो उसको लोगों को जगा के रखना है अभी. हाँ, उसके पहले उसे खुद जागना है. मैं निपुण का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ, बाकी तो आप सवाल जवाब उससे कर सकते हैं. निपुण प्रभाकर इज़ एन आर्किटेक्ट, photo journalist and writer based in Bhopal and Delhi. He is the founder of Dhammada Collective, an architecture and design practice focused on community-led and sustainable building. He actively works with and also documents everyday spaces, traditional craftsmanship, and the communities that build them. His work has been featured in publications like Wallpaper, The New York Times, and The Washington Post. जब निपुण को मैंने ब्रीफ मांगा था तो इतना छोटा सा ब्रीफ आया, तो प्लीज़ उसको ग्रिल करें, सवाल जवाब करें एंड नो अबाउट हिम. सो प्लीज़ वेलकम निपुण प्रभाकर ऑन स्टेज एंड लेट अस नो अबाउट हिज कॉन्शियस प्रैक्टिस थ्रू द प्रेजेंटेशन. थैंक यू. Big challenge. It's coming. ये lights off हो गए? All of them. Which
any screen share mode, like you have to duplicate, not extend. Yeah, I just actually I did everything over this stuff. You can remove it and plug it in again. I guess HDMI अगर कर दूँ Source भी इसको थोड़ा ऐसे रखेंगे, so we will just keep this supported. Scrolling, it's searching, it's not finding, so it is in the scrolling mode only. Okay. Okay, I'm आगे मिररिंग उसमें मिरर नहीं, जब तो नहीं वो ऑप्शन नहीं दे रहा अभी फिलहाल है ऑप्शन सारे बराबर चल रहे हैं. इधर नहीं हो डिटेक्ट और लाइट इज ग्लोइंग हियर, सो स्क्रीन शेयर, एक्सटेंड, डुप्लीकेट. आ गया है बट आई थिंक आई जस्ट रीस्टार्ट इट. इट्स देयर, आई कैन सेलेक्ट इट. ओके आई जस्ट रीस्टार्ट. हाँ मतलब वैसे तो सब चल रहा है, इट्स फाइन. आई जस्ट रीस्टार्ट. तब तक कुछ और अगर बातें नहीं तुम भी कर करनी सकते हो, वो तो कुछ नहीं स्टार्ट हो रहा है. आई थिंक एक बार स्टार्ट हो जाए फिर लगाएं. ठीक, मैं एक्चुअली इसको ऐसे 2 minutes. किसी ने बननी है वो अपने आप कुछ चीज़ों को हम रोक नहीं सकते. हाँ ये कुछ ना कुछ टेक्निकल उसमें आता ही है. वो वाला दो, पहला वाला दो. और तो चेंज करो ना. हला ये लगाओ. मैं इसमें प्रेजेंटेशन डालूँ. कहाँ लगाओ, इसको लगाओ. हो गया नहीं, चालू है. पेन ड्राइव तो डिटेक्ट नहीं हो रही.
ये तो वायरलेस प्रेजेंटर है। अच्छा, पेन ड्राइव नहीं है ये। एक बार आप वापस लगाना, वापस देखते हैं क्या कब तक होता है। जब तक पेन ड्राइव मिलती है तब तक ये ट्राई करते हैं। हाँ अभी चेक किया, चल रहा था। ये नहीं होता ये नहीं चला गया नाही, सगळं चेक केलं, सगळं चेकही केलं होतं, पण आता लागत छान ते पण बरोबर आहे सगळं. अच्छा, एव्हरीथिंग इज वर्किंग. ये कन्वर्टर आपका ही है ना? ये अपन अंदर जितना करना है। ये तो अभी हमने चेक किया, ये भी चेक किया, ये भी चेक किया। कोई नहीं, नींद से बाहर आ जा रहे, कोई बात नहीं। ये नहीं, मैक को क्या होता है? क्या ले जाएगा आदमी से? हाँ दिख रहा है? हाँ लैपटॉप को रख दो नीचे। लैपटॉप चाहिए इसमें तो डाल रहा है। हाँ हाँ, मतलब एक मिनट। हाँ we can connect it, open it, we will connect the cable to that. तो पता चला ये प्रॉब्लम यही है। This डब्बा here. He wanted it a lot. Automatically comes source found. आ गया। अरे it's always saying like that. Searching. Searching. It's already only searching only. Yeah, I have duplicate. तुम्हारा अरे पर हम चेक कर रहे हैं। अच्छा इतना भी दिख जाना चाहिए था। नहीं यार डुप्लीकेट सब बाद में करना होता है। ओके, तो अपने पास वायर है वहाँ पे, लाओ तो दूसरी वायर है, देख वहाँ पे बोला। हाँ अभी तक तो सब सही था। कोई बात नहीं, ये है वायर, वी जस्ट चेक इट आउट। नीट संदीप को याद है। वेट हाँ हाँ लगना ही चाहिए। देखो अभी SGMI 1 में 2 में डाला मैंने। ओके रुको ये SGMI 2 लगाओ या 1 लगाओ। ऐसे रखता हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल लगा के देखो। लगा के देखो। अरे लगाओ निकालो। चेंज हुआ क्या ये? स्टार्ट मिररिंग तो आया था, वो तो मैंने क्लिक किया था, अभी तो ये तो चेंज हो गया। टू पे है कि 1 पे?
आगे 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 okay but so we have another उसको ऐसा घुमा के okay okay don't touch okay This is your mic. And your diary and phone is there. हाँ ठीक है Lalit sir, मुझे मेरा phone दे दो. और वो seed ball भी दे. Thank you for not sleeping. Okay, so I won't take a lot of your time. I'll just quickly start. Actually, a lot of my work is already done by Shardul. So thank you, Shardul. Conceptually and actually, Design Jatra has been one of the biggest source of inspiration for us also. In fact, when I was interning in 2015, they were the first ones who came to Hunarshala and gave a presentation on that, on their work. But since there are a lot of students also and I keep getting these questions often, I would like to start. I would just like to show you a cross section of my journey and in architecture as a student, in photojournalism, and also as one of the partners in Dhamada Collective. So in one of the early influences which influenced my life but also my work was learning to look and to listen. So in my first year of architecture, I was thinking कि कैसे करना है because I ended up in architecture. In fact, that was something that I also wanted to do. But I also realized that it was, very theoretical, very surface level work. So I thought that in every vacation that I'll get, I'll do something which is not architecture. And eventually I realized that that is something which supported my architecture practice the most. So my first internship was in Hindustan Times as a photojournalist. It was a long shot. I had no idea if I would be selected. I just randomly went and I was rejected at the first desk. And then he, after requesting him to, so I can I also meet the editor, the photo editor? He said, okay, you meet him, but don't waste a lot of his time. So I went and I met the editor and I was showing him my photos. And there was one particular photo that he, stopped at, which was a photo of Gauhar Mahal in Bhopal, which is a very beautiful building. And at that time, I was just trying on this new technique which was coming called HDR, High Dynamic Range, where you had to photograph a photo in many different exposures and then sandwich them together so you get the depth and the quality, and you also get light in all the places. And now it's in every other phone that we have. But anyway, that photograph, he said, I would really like if you can give a print of this to me. And I had that print in my bag at that time and I gave it to him. He said, oh, I want a signed copy. So I also signed it. And anyway, this is how I got the internship. And that is something which changed a lot of perspectives that I had, especially about working with the communities. So after office hours, I used to hang around in Connaught Place and just take long exposure photos. And the first photo which got published was this, where lightning was got stuck in Connaught Place. And I was also photographing other events, everyday regular events, for example, Bharat Bandh at that time. And how do you show a country which is closed? So you show guards relaxing, who are generally, not relaxed at all. I was also photographing, longer stories. For example, these are Love Commandos. Anybody knows about have you heard of Love Commandos? No? Okay. So Love Commandos was a group which was helping couples who had eloped, and they are based in Chandni Chowk in Delhi, and they were supporting a lot of couples. They were giving them shelter. They were also, supporting them legally. Eventually, in January 2019, the founder was arrested for extorting money out of the couples.
So as journalists, I also realized we have to be less emotional. We have to objectively look at things. And on days when there was no specific story, the most constant story in any newspaper or in any conversation is the weather. So weather photos are always, green in newspapers, and weather is always changing. Every day the weather is changing, and so how do you photograph the changing weather? For example, in Delhi, if you want to show it's really hot, you go to the place where they give water. Or you show, generally the most common image of heat is kids playing in a public pool, some kind of fountain or things like that. And that taught me a lot. I was in the hottest days of Delhi, I was just walking around and I was photographing people. Uh, the biggest lesson I got during that time was no people, no picture. So I had a very interesting, I was going from one assignment to another in the internship, and I was in a metro, and I saw a burning car on a flyover while passing through the metro. So the next moment I just got out of the metro and I ran towards that car because it was looked like an important photograph. And I went there and it was still burning. There was fire brigade around, and I was like almost next to the fire brigade. And very happily I went back, and I went back to the editor and I showed him, and I knew that this is going to make, if not the cover, it is going to make it in the print. And I said to my editor that, how is it? He said, it's a great photo, but it's not going to come in the newspaper, because in newspaper we have this thing called no people, no picture. Ultimately, as humans, we relate to humans. So as long as you have people in the photograph, people can relate to it. And this is what also, supported me in some ways in photographing architecture. We'll come back to that later. Then the other major influence I had was my internship in Hunarshala Foundation, which is a Gujarat-based, Kutch-based organization, but working across the country, also in other countries. And first project I landed up was in Muzaffarnagar. In 2013, a very bad communal riots had happened, and Hunarshala, along with some other social organizations, was working in that. And actually, the thing was that if there was some kind of a killing that happened in the village, people, mostly Muslim people, they vowed not to go back to that village. So they wanted a new, safer place. So out of those few places, we were working on those two villages. And I was also documenting as I was, experiencing and designing. Uh, just in how many roof types do we know? Generally, how many type of roofings are there? Can anybody tell me, like, on uh,
government of Madhya Pradesh. Twenty-sixth of March. So they, it's never knew existed. And I want to take you to this state, and in Maharashtra things, tents, tarps on the back of the flock.
Telangana. Karnataka. And walking that as Rabari has done in of 90. Dhanu to done just on the and then they also a lot of highways are now those play. They also had Tal. So eventually they reached uh, uh, made with the they prefer how a penning is they
not just keeps you see wool is on decline. People are recommending process. Since last 40 years. So India is the largest producer of, still largest, and out of that 38 million tons of wool. So you should see that it's a short film. And then this is the other kind of economy, which is the flesh economy. Um, keep haldi. Uh, and that's the basic element of shelter. So we were just playing with the, charpai as a module, and cutouts of shelters right now are of tarpaulin. Touch. Family.
form of a Sharjah and uh, 40 different, 13 different communities in Kutch. Uh, the Ahmada, and we have decided organic farmers market in Bhopal. This event, so they said, why don't you come and our pallet woods, we designed other things. But legs to the book, some experiments not document pallet wood, and we are coming out with a book on this, and we are going to with paper chair we did out of tubes to also work. There where it has to a processing unit. So beyond whatever of how like when they were wearing the headset, they could see the profiles, but then they had to use their own skill to follow those profiles. From the herd hands that build, from the feet that walk, and the communities that all is awake.
question. Total book was written. Thank Nitin, thank you. That was a really interesting presentation. I had a question that what do you think about let's say for and I felt think best way to work with the community is actually, मैं तो यहाँ पे इसलिए हूँ, मैं तो is that it all, but I think ultimately all of us want to do good, and more than anything else, I think it's our not is inspires you? And see dinner
dimension of that. बहुत सारी चीज़ साइबेरिया एक्सपेंसिव बिकॉज सो अगर कोई ऐसे खड़ा है वहाँ पे which is I don't know how we will, I mean perhaps a slow lifestyle as you mentioned, but in terms of a tangible one thing that yeah, in general, yeah. to some extent because That plastic problem in the village. You know, in Himachal, I want them to buy that machine or
We have को अपने काम में इन्वॉल्व करना चाहिए. I mean, actually, you know, the octave important है. So कुछ तो करना चाहिए हमें उसके बाद. मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इन्होंने भी ये जो लोग हैं We are making. Those little किसी का कोई How? अच्छा शुरू हो गया शुरू हो गया.
हेलो, अपनी चाय हाथ में लेके आ जाइए अंदर। परविंदर, चाय लेके आ जाओ अंदर।
and now so that is Madhya. How building came out, so मतलब all are architects. Traveled abroad, and we don't have a playground. Every did. And lots many people who will join us.
कोर्स लोग जाते